So, hi, we'll be starting with our first video for this series, which is called Placement Diaries. So, today we have Shiv Kumar with us. And can you please introduce yourself? Hi everyone, my name is Shiv. I recently graduated from NSIT after pursuing my bachelor's in information technology. I'm currently working at Atlassian as a software developer and glad to be here. So, how was your experience with Atlassian till now? क्या क्या नया सीखने को मिला? क्या क्या किया? And it's been almost 2 months, right? When you started working with Atlassian. मतलब 3 महीने हो चुके हैं अटलास ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं अटलासियन में काम करते हुए इट हैज बीन ब्रिलियंट एक्सपीरियंस मतलब it's been better than what I expected it to be because Atlassian is very famous for its culture, for its teamwork culture. मतलब Atlassian Nasdaq पे listed है और उसका sticker ही team है. Yeah. So the label that it has, it's team. So that actually shows that's one of the indicators that how strong they are on their team, how much they focus on that team part. And that is something I've really seen at the company. Like, अगर मुझे कोई problem आ रही होती है, I just ping on the group, and everybody just bounces on it and tries to help you. They are very cordial, very courteous, very helpful. And the work that I've been given, I like it. I really like the work that I've been given, and it's really challenging sometimes, and I really like it because the moment I knew कि हाँ मुझे coding करनी है, and I knew I liked it, I knew that I could work with this, and now I'm getting paid for it. Like I could work on coding for free, but now अब मुझे कोई पैसे दे रहा है उसके, so it's like double whammy कि हाँ coding भी करने को मिल रहा है और कोई पैसे भी दे रहा है, so it's actually best Yeah, of I both read worlds. somewhere Atlassian like one of मतलब top 10 companies में है to work with, like best workplace environment. It is Yeah, like it's third one या of the best fourth. companies to work at. It's second or third in that list. मैंने कहीं LinkedIn या कहीं पे देखा था, right? मतलब मुझे अब एक्चुअली मुझे रैंक याद नहीं है बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट But प्लेसेस yeah, टू वर्क it's एट one या of the best of the world. So nice. Uh, और कहाँ कहाँ पे आपने intern किया है? Like which all places have you interned at? So my internship journey wasn't that straightforward. On campus, मुझे कोई internship नहीं मिली थी. I sat for around 5 or 6 companies and I did not clear any of them. But luckily, I was able to land two research internships. One was at CERN Labs and the other was at Triple IT Delhi. So CERN Labs wala was for the summers and Triple IT Delhi was a semester internship that I also completed over the winters. And to be honest, मैंने on campus internships के ज़्यादा prepare भी नहीं किया था because I was inclined towards research. I wanted to do research. I wanted to go for a master's straight away after college. But और ये mindset but अचानक से after change कैसे हो गया? Like पहले you so were totally focused for a research profile, MS करनी थी mhm, and mhm. का 4 या 5 से ज़्यादा research papers भी हैं and काफी अच्छी conferences में research paper हैं, but Mhm. then you got like first day placement भी हो गई, तो इतना drastic shift कैसे था? So that that happened because of the research experience. Like Yeah. the internship that I did, they were great. But one thing I realized was कि um, I don't really know my area of interest. Like the areas that I had worked in internships मैंने की, I realized कि it's not limited to just one area. It's not just deep learning that is of interest to me, and that is when I realized कि I started late because the second year I was very involved in other societies, Yeah. DevSoc, FES. I was involved in those societies, so I did not actually put in a proper time to think about what I wanted to do. Third year, I realized I wanted to do research, but I did not put a proper thought on what I wanted to do. So after researching and doing those research internships, I realized कि मुझे पता नहीं कि मुझे करना क्या exactly in research, and there is a lot of fields to think about, to look into, and that is when I decided कि अभी it's better not to just jump into a field because once I jump into a masters, and then I realized कि ये ठीक नहीं था, then that would be hard to come back from. So I thought that's better that I take a placement for now, and because आप NSIT आए हो,
NSIT में आए हो तो हाँ, the one thing that NSIT actually offers you is a good placement. NSIT might not offer you a good brand name, it might not offer you a lot of other things, infrastructure वगैरह कुछ ना भी हो, but one thing that NSIT will really offer you is a good placement. So I thought कि वो ले लेते हैं, and that will give me a good buffer time to decide कि क्या करना है, and that actually helped me in one more way, that I came to Atlassian and I realized that software development is something I really like. And I used to develop personal projects on GitHub. उससे भी पता चलता था कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है. So you have mentioned that you were a part of DevSoc or FES, right? So क्या आप एक पूरी कॉलेज जर्नी बता सकते हो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, क्या क्या किया हर साल, कहाँ से स्टार्ट किया, देन एकदम कोडिंग की तरफ कैसे इंटरेस्ट आया? Like because starting में you said you were more inclined towards DevSoc, FES, अपने आप like सब कुछ एक्सप्लोर किया and then finally decide किया कि कहाँ जाना है. So So मतलब I had an inclination towards computers since childhood, but कभी ढंग से पढ़ने का मौका नहीं मिला. I was scared of programming, to be honest, because कभी ढंग से कभी की नहीं till I came to college. So in the very first semester, I enrolled for a data structures course at Coding Ninjas. But that overlapped with my training for a conference called Harvard MUN. So I could not complete that properly, and I went for Harvard MUN because that was the most in thing at that point in time. कि prestigious. अगर आप exactly Yeah. कि आपको सीनियर्स बोलते हैं कि HN1 अगर आप जाओगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा. It will be the peak of your college life, and all of this experiences going to Boston, and also going on a trip with people of your age, no parents, no nothing, and going on a trip like that, participating at a conference at Harvard University, getting a chance to go to different colleges in the States. That was a good experience. So I wanted to take it, but that took a lot of time, around 4 Yeah. or 5 months of my time. और वो आने के बाद you are in a nostalgia कि यार हम वापस क्यों आ गए. इंडिया में तो मतलब हमारे कॉलेज में तो वो फैसिलिटीज नहीं है, वो हाँ. कंडीशंस नहीं है, हाँ. so you're not able to concentrate properly. And then second year I spent again on starting with data structures. I tried doing competitive programming, did not like it. Okay. Then I got into two societies, DevSoc and FES. I don't know why. मुझे नहीं पता क्यों, because मुझे पता था कि मुझे कोडिंग करनी है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था, मुझे नॉन टेक में इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज मेरी फैमिली में ऑलरेडी 2 लोग नॉन टेक जॉब्स में हैं. And I've seen their lives, and I did not want. It's not that I don't like. I think they don't like it, or I'm not saying it's not nice. I'm saying it's not for me, and because I feel कि coding में you get something tangible out of something. कि you are coding and you can see it. There's like a proper mapping between what you're doing and what your output is, and I sometimes feel कि non-tech में वो tangibility नहीं होती. Like that's what I personally feel. I don't know. And मैंने इससे फिर experience ज़्यादा नहीं किया, but I got into DevSoc and FES because that was again the in thing. सारे popular लोग वो कर रहे थे, so I just wanted to do it. I did it, and but yeah, one thing that really helped me there also कि network अच्छा बन गया था. कि one thing that NSIT is में काफी important है, and NSIT gives you is the seniors. So even though DevSoc and FES did not align with my final goal, but they gave me the seniors that actually helped me align with my goals. Right, मतलब करते क्या है, सोसाइटी ज्वाइन करना, सब कुछ करना किस लिए कर रहा है? कनेक्शंस के लिए. Like if you need someone, कभी भी लाइफ में तो एक कॉल, एक टेक्स्ट, लिंक्डइन टेक्स्ट पे वो तुम्हें रिप्लाई कर दे. And मेरा एक्सपीरियंस यही था when I was working for. More than that actually कि they became like मेरे बेस्ट फ्रेंड्स. जितने भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स ही मतलब रहे हैं, या जूनियर्स रहे या सीनियर्स रहे. And the one thing मतलब मुझे कोई दिक्कत होती है, I have any problems, it's not about even problems, partying, enjoying, anything that I am thinking about, I want to talk to somebody, they're just a message away. And not even that, जो मेरे सबसे ज़्यादा सीनियर जिन्होंने हेल्प की है, that he is like 4 years elder to me. He was a FES former president. He just came to college one day, and we just got to talking. I messaged him on Facebook, and उसके बाद से he helped me through a lot of things. He is the one who helped me get the internship at IIIT Delhi. He is the one who guided me through a lot of things. Placement कैसे prepare करना है, कौन से subjects कैसे पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं, to have the right motivation towards things. तो seniors काफी help करेंगे, and that is how society has helped me.
And after that, in third year, I realized कि हाँ coding ही करनी है. And societies में, because societies don't really align with my goal, so I thought कि in a way, I was wasting my time by being a part of the society. It wasn't that the societies were not helpful, because for some people it would be really helpful, but for me it wasn't. So I left them. Dipsoc तो मैंने second year में छोड़ दी थी, and FES मैंने third year में छोड़ दी थी, and then I concentrated completely on coding. Personally, what I did was मैंने GitHub पे contribute करना शुरू कर दिया था. Because GitHub has that green pattern sort of a thingy कि आप एक बार commit करोगे तो वो दिखने लग जाएगा. And that was like a positive reinforcement for me कि करता हूँ तो उसमें कुछ बढ़िया दिखता है. Like a week or two, I was committing anything. But after some time, when I got a little better, I started finding open source projects, and उनमें थोड़ा contribute करने लगा. Started with basic documentation edits. फिर उसमें कोई framework सीखे, then उसमें contribute किया, and करते I remember fourth year के end तक I started contributing to Hasktorch. So Hasktorch is the bindings for PyTorch in Haskell. So मैंने उसमें functional programming भी सीख ली. मैंने उसमें proper PyTorch की API बनानी भी सीख ली in a different language. And Haskell interfaces with C language. तो मैंने वो interfacing करनी भी सीख ली. So open source करने में मुझे बहुत मजा आ रहा था. Third year में I spent a lot of considerable time doing internships. Spent a lot of time working with professors to write research papers. And also then I was working on this rover project, Mars rover project called Ares, जिसके आप president हो अभी. So I spent a lot of time working on that as well. I did not actually contribute on the design, but I learned a lot because that was my first year in Ares. That was a good learning experience. So third year was like purely tech. Because मैंने third year की starting में ये सोचा था कि मुझे कैसे अपना resume build करना है. कि I moved in reverse कि मुझे अपने resume को कैसे build करना होगा. And accordingly, I'm not saying that is the only motivation you should work according to, but knowing that that how one project fits into a bigger picture, that really helps. So वो मैंने करना शुरू करा था, and accordingly I was working on small projects. अगर जैसे for example मुझे अचानक से मन कर रहा था कि I want to replace my Linux commands with Harry Potter spells. तो मैं I've seen that project. उसमें काफी ज्यादा मतलब stars and hooks हैं. Like आप GitHub पे भी है वो. मतलब काफी हैं. हाँ मतलब for a very modest, it's a modest repo. It's a modest repo. मतलब इतना भी ज़्यादा कोई वो नहीं है. But it was like a fun project. So like for example कि Apple ने जैसे एक feature निकाला हुआ है कि you can click on the sort button and it will sort all the files according to their extensions. So उससे पहले ही I was feeling that thing in my, जैसे for example हम downloads करते हैं, so downloads में clutter हो जाता है बहुत ज़्यादा. So I wanted something जो उसको classify कर सके और उसको segregate कर सके. हाँ, so मैंने उसके लिए एक bash script लिख दी थी. That other people also used in my class before Apple came up with it. So वही है. So I liked coding. I started making small projects ऐसे ही, just to the sake of it. No ulterior motive कि मैं अपने resume में डालूंगा, just because I wanted something and I knew I could do it. So उसमें फिर I spent third year mostly going through all of that. So when did you start preparing for on-campus placements? Like a third year almost खत्म हो गया. नहीं, so उसी में because my winter internships ended in February, so I realized कि अब मुझे placement के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए. Because that is something I wanted to do, because that was the plan कि मैं placement के लिए तैयारी कर लूँगा, and उसके बाद मैं एक proper thought दूंगा कि masters करना है कि नहीं करना. Because placement crack कर लो तो it does not take a lot of time, because if you have prepared well and उसके ऊपर if you are lucky, so you will get placed in the very first month या फिर पहले 2 हफ्ते में या पहले 3 हफ्ते में get placed. Then you have the entire year to prepare for your masters, for your master applications and all of those things. So मैंने मतलब conclusively नहीं decide किया था कि masters करना है कि नहीं करना है. But I had thought कि placement के लिए तैयारी कर लेते हैं. There's no harm in it, and it will not take a lot of time. मुझे बस basic amounts of time देना है, and summers में एक अच्छा खासा time देना होगा, but that's not a big deal. So वही मैंने किया. I started in February में I started. So I did not do data structures in February. I started with subjects, because subjects मुझे interest भी था,
एंड मुझे बुक्स पढ़नी थी. देयर वर लॉट ऑफ बुक्स ऑन माय वेटिंग लिस्ट, सो आई बुक्स. OS में मैंने I wanted to read something. I read that. It took me around a month and a half to read that. मतलब मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के उसको खत्म कर रहा था थोड़ा बहुत. Then distributed systems में मुझे एक बुक पढ़नी थी to design data intensive applications. वो I read. I was interested in system design. System design के मैंने थोड़ा सा videos वगैरह देखने शुरू कर दी थी. I really liked it. So I spent considerable time on the subjects पहले ही, because I knew कि एक तो ये help करेगा in general जब भी मुझे कुछ भी चाहिए होगा, and I knew it will help with the placements as well. Then during June and July, while I was pursuing my internship, उसके टाइम ही मैंने I cut short my internship around about by 2 or 3 weeks. Okay. And I came back earlier, and उसके टाइम मैंने prepare करना शुरू कर दिया था. And what I told them was कि let's convert this in an internship, and I will do this till November. So internship extend हो गई थी, and I started working on the placements. Placements की तैयारी करनी शुरू करी, data structures, and also it was very important to realize कि I knew my weaknesses and my strengths. I knew कि मुझे graphs बहुत अच्छे से आता है. I know मुझे trees बहुत अच्छे से आता है, Fenwick trees, segment trees, red black trees. I knew all of them. मुझे trees में कोई issue नहीं था, मतलब visualize करने में भी और logic सोचने में भी. Because there are two things in your online tests. One is the logic thinking, जो आपके interviews में generally check होता है. They don't really मतलब in a lot of processes they won't really ask you to implicitly code properly. And then there are online tests. So you need to be strong in both implementation and logic thinking. So implementation के लिए I got through interview bit. I was going through around about 5 to 6 questions every day, maybe even more than that, from starting to finish. मतलब बीच में कोई skip नहीं कर रहा था. ऐसा नहीं था कि मेरा graph strong है तो ऐसा कर लेता हूँ, नहीं. And then Geek for Geeks से I was picking up a topic, doing 30-40 questions, like 5-10 easy questions कि एक बार topic समझ आ जाए. जैसे heaps है, heaps के 5 या 10 question कर लिए कि priority queue या फिर heap implement करनी है आगे. Then exactly. Then 20-25 questions medium level के कि उनका logic सोच लिया, logic and pseudocode, not the entire code, just pseudocode, because I knew कि अगर मैंने implementation अच्छे से practice की हुई है from interview bit, कि अगर मैंने logic सोच लिया तो फिर implementation में कोई दिक्कत नहीं आएगी. मुझे implementation पे अपना बहुत ज्यादा trust था, confidence था कि हो जाएगा. And then 5-10 question hard questions, जिसमें से sorry, जिसमें से अराउंड अबाउट मुझे कभी कभी 1.5-2 घंटे लग जाते थे हार्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करने में. बट दैट वाज द बेसिक प्रोसेस फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स. वो किया फॉर अराउंड जुलाई तक वो कंप्लीट किया. जुलाई के एंड में जनरली दैट इज हाउ कंपनीज फंक्शन एट आई डोंट नो हाउ कोविड में कैसे काम कर रहा है. लास्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई द फर्स्ट कंपनी अराइव्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. इस पर थोड़ा लेट हो गया था. The first company arrived at like 17th or 18th August, तो और ज़्यादा टाइम लग गया था. COVID है, but it was happening since 4 or 5 years. कि जुलाई के लास्ट फ्राइडे पे कंपनी आती थी NSIT में, and I prepared accordingly. बल्कि Atlassian की तो एक काफी funny story है कि when I was interning at IIIT Delhi, there was a senior जिनके लिए आई थी. For example, Atlassian came for the my senior year, for hiring in December. Okay. And I saw कि Atlassian का जो package है is the highest, like CTC. This is the time. this is the time जो मुझे कोई idea नहीं था कि CTC क्या होता है, breakup क्या होता है, fixed salary क्या होती है, कुछ नहीं पता है. जैसे दिख रहा है कि 52 LPA लिखा हुआ है, and that is the highest on campus. And I realized कि December में आती है. So मैंने ये सोचा कि यार कुछ हो ना हो, मैं December तक तो तैयारी कर ही लूंगा. कि December तक तो एक कंपनी निकाल दूंगा, and then I research about Atlassian. Exactly. तो मैंने Atlassian के बारे में research किया. And that is when I realized that Atlassian is a very good company. उसके culture के बारे में, and the products that it makes, all of those things. And it was a very highly growing company. But turns out it came on the very first day, and I was like, shit, man, shit. पहले दिन ये क्या हो गया? But I suppose luck had it कि Atlassian पहले दिन आई और and उस दिन अच्छा था. क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, बस टेस्ट निकल गया, राउंड्स निकलते गए एंड बस फिर लग गई. बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एग्जाम से पहली एक रात, बिकॉज आई वाज लाइक कि बहुत तैयारी कर चुके हैं, अब और तैयारी नहीं होगी. सो आई वेंट टू माय फ्रेंड्स रूम्स, जिनके साथ मैं रूममेट रहा था उससे 1 साल पहले. आई जस्ट वेंट टू देयर रूम एंड हमने पूरी रात सिर्फ बातें करी. हमने कुछ नहीं किया उस पूरी रात.
and I was very calm, very composed. I was like कि हो जाएगा जो होना होगा, अब हो गया. And I went there, written exam दिया. मुझे नहीं पता चला, मेरे दोस्त को पता चला कि मेरा क्लियर हो गया, and he told me, and then I went there without a resume, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि resume की जरूरत पड़ेगी या थर्ड टाइम मत पड़ेगी. जरूरत पड़ेगी पहले दिन. मैं ले आऊंगा, इतनी कोई टेंशन नहीं है, बट पता नहीं था कि पहले दिन ही जरूरत पड़ जाएगी. पहले दिन जरूरत पड़ी, and it was raining that day, but some of the other way I got a lift. I got my resume printed. I came back. Everything happened to the queue. Everything happened perfectly, and yeah, I couldn't have written a better script myself if I had the chance. Like puri college journey, mein, to be very honest, it was like made up of a lot of ups and downs, but I couldn't have written a better script myself. Then उसके बाद तो एक साल मैंने बिल्कुल एंजॉय किया. जो मार्स रोवर वाला प्रोजेक्ट था, I spent a considerable amount of time in the odd semester, because odd semester मैंने सिर्फ 2 subjects लिए थे, and even semester में I got busy with other things, and then COVID happened, and then I couldn't come back. So उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं. तो उसके बाद की तो जर्नी सबको पता ही है कि COVID आ गया तो सब घर पे ही थे. So then we just waited. So that is the 4-year journey for you. Okay. So कोई suggestions for your juniors, like connections build करना important है, सब explore कर लेना चाहिए, जब भी कुछ like you can decide क्या करना है, but ऐसे ही सोच के ही बैठे हो कि बस tech ही करना है, तो you will not be able to explore everything, right? So can you just tell? मतलब मैं कभी सोचता हूँ कि अगर you know the cliched thing कि अगर मैं अपने first year of you know self को अगर कोई tips हो गया, FES join नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है. So the most important thing I think is that I would have told myself was be truthful to yourself. कि अगर किसी चीज का कोई मोटिवेशन है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो कि मुझे जॉब सिर्फ पैसे के लिए चाहिए, मुझे कोई कोडिंग बट मुझे पैसे के लिए चाहिए, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ कि यार मुझे पैसे कमाने हैं शुरू में, और मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है. सो बी वेरी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ कि यार कोडिंग में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ. सो डोंट फेक इट टू योरसेल्फ कि यार मुझे कोडिंग पसंद है, मुझे डेटा स्ट्रक्चर पसंद है, मुझे ओएस पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है. अगर नहीं पसंद, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड वर्क अकॉर्डिंगली, बिकॉज व्हेन यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यू विल बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंगली. बिकॉज अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे डेटा स्ट्रक्चर पसंद है, मुझे ओएस पसंद है, तो फिर आप फालतू की बुक्स पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप फालतू अपने आप यू विल ट्राई टू यू नो गेट टू इनटू अ फ्रेंड सर्कल दैट इज वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन एंड यू वुड नॉट जेल वेल इनटू देम. बट इफ यू नो कि पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर यू नो योर मोटिवेशन रियली वेल कि यार मुझे बस करना है, मुझे नहीं पता अभी क्या करना है, मुझे क्या पता यूपीएससी करने का मन हो सकता है, मुझे एमबीए करने का मन हो सकता है, बट अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे ये दिख रहा है कि कोडिंग इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड, देन डू इट. एंड then your friend circle will be made accordingly, and that is really something that will really help you. So being truthful to yourself is something that will really help you, because वो आपका process पूरा motivate कर देगा. And then another thing that I feel कि what I would have told myself was कि question the herd. कि it's very easy to go in the direction जहाँ herd जा रही है, कि अगर सब लोग अश्वमेध के ऑडिशन में जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ, अगर सब लोग डेप्थ ऑफ के ऑडिशन पे जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ, सब HM1 के ऑडिशन जा रहे हैं मैं भी चलता हूँ. बट इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू. अगर सब जीआरई दे रहे हैं या फिर सब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इट माइट नॉट बी द राइट थिंग फॉर यू, एंड यू नीड टू क्वेश्चन कि भाई क्या रीजन है आपका, व्हाई आर यू डूइंग इट. एंड वंस यू फील कि यार ये रीजन मेरे साथ अलाइन नहीं होता, बिकॉज आपने पहली चीज कर ली, यू हैव बीन ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. So now you know your reasons, you know your motivation, and then you can explore properly. You can ask people कि आप क्यों कर रहे हो. जिनके साथ आपको लगे कि align हो गया, you can go in that direction. For example, you feel कि यार masters is the right way forward. You can talk to the proper seniors. You can talk to the seniors कि यार मुझे ये लग रहा है, आप बताओ क्या सही है, because वो field में उन्हें पता है कि क्या होगा, and they know when you're faking it and when you're not faking it, you'll get proper advice. So that is one thing कि question the herd, कि don't do something कि just because सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, because that would not take you anywhere, and it's okay to be alone. मैंने एक काफी majority of my college time मैंने अकेले ही बताया, and I really liked it. And शुरू में डर लगता है, but really you would really like it. Then CGPA, a lot of people say कि CGPA matter नहीं करती, but CGPA बहुत ज़्यादा matter करती है, and मुझे बहुत late realize हुआ ये.
my second semester got really screwed up because of that norm कि CGPA मैटर नहीं करती. CGPA मैटर करती है, and to be very honest NSIT में अच्छी CGPA लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है. नहीं करनी पड़ती. आप बेसिक छोटी चीजें करोगे, आपका सारा काम हो जाएगा. It's like the 80% 20% rule. You don't really need to work a lot to get to a good CGPA. 8.5 8.75 CGPA लाना is very doable, at least in COE and IT. 8+ लाना तो बहुत easy है, मतलब doable है. Easy तो नहीं है, but doable है. हाँ, it's very doable given minimal efforts. Yeah. At least in COE IT. मुझे दूसरी branches का नहीं पता, and I will be very respectful for that. COE IT में, not even COE, मैं अपनी branch की बात करता हूँ. COE का आप बताना, आपको पता है. मैं IT में हूँ. IT में teachers are very helpful. Teachers will know कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको placement चाहिए, teachers will be okay with it. They will give you attendance. They will be okay with everything that you want, and they will give you marks as well. एक आधे teachers हैं जो नहीं देंगे, but that is okay. You can't have the best of both worlds. Then placement wise, कि don't get into the mentality competitive करनी है. अगर आप competitive कर लेते हो, and if you can actually spend some good time on competitive, that would be really helpful. To be very honest, जो ये लोग कहते हैं कि competitive helpful नहीं होती, competitive matter नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता. Competitive बहुत ज़्यादा help करती है, if you can really get into it. I did not like competitive, and I could not wrap my head around it because मुझे logic समझ नहीं आता था competitive का. It's a sport. A lot of people use it as placement tool. It's not a placement tool, it's a sport. जो लोग उसका actually as a sport use करते हैं and then placement में drive करते हैं, वो उनको काफी help होती है. But it did not work for me like that, and it's okay. You can spend your time on projects. You can spend your time on open source. That would really, really help you. And another thing that I can think of is कि comes in after you work hard for a certain amount of time. Right. अगर आपने अगर मेहनत नहीं करी है, तो आप एक कॉमन पेडेस्टल पे नहीं पहुंच पाओगे. Luck starts happening when you reach that common pedestal. वो उन लोगों के लिए काम करता है जिन्होंने मेहनत कर ली है. अगर कोई ये बोल रहा है ना कि इसने बिना मेहनत करे कोई कंपनी निकाल ली है, ऐसा नहीं होगा. हो सकता है कि उसने आपसे थोड़ी कम मेहनत करी हो, या फिर बहुत, मतलब एक सर्टेन, फॉर एग्जांपल अगर आपने 100% मेहनत करी हो, करेगा, बट बिना मेहनत के तो कोई काम नहीं हो पाएगा. अगर आप ये कह रहे हो कि बिना मेहनत के मैं तो लक भी हेल्प नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कितने लकी हो. Even if you drink the lucky drink, it won't help you. मेहनत तो करनी is very important. And any other thing? And yeah, just enjoy college. 4 साल वापस थोड़ी आएंगे. हाँ, मतलब that's the point. Don't waste your time. When you're true to yourself, आपको पता है कि यार मुझे पता है क्या करना है. Then you will be confident in what you do. You'll be able to binge watch TV shows. You'll be able to play CS:GO. You will be able to do a lot of things. You'll be able to go on trips because आपको पता है कि मुझे करना है क्या. So you'll have that calmness. You'll have that composure कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. And I suppose then you'll be able to enjoy life. And मतलब best thing मुझे ये लगती है कि चाहे लाइफ में कुछ हो जाए, be positive and enjoy stuff. सारी चीजें बढ़िया ही होंगी. Have a smile on your face and it will be nice only. कभी ज्यादा don't fret about things. Don't, and also कि किसी की और की नौकरी लग रही है तो don't feel sad about it. It's okay. It's a part of the process. I get it. Switch off Facebook, switch off Instagram, but wish them well because positivity helps. Positivity comes back. And just be happy. मतलब खुश रहोगे तो मजा आएगा. मतलब और मजा आएगा तो मजे से ही, तो मजे के लिए तो सब कर रहे हैं. So just be happy. Don't be sad. Don't be sad. Okay. Yeah. Chalo. So let's wrap it up. It was a really nice experience talking to you. काफी ज़्यादा अच्छी चीजें पता चली. So I think औरों को भी पसंद आएगा. And okay. And congratulations on your first episode. And I hope कि आगे बहुत सारे episodes होंगे. And देखते हैं how it goes. Yeah. Thank you.